हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Chapter 1, The Earth and the Graticules. Make friends with maps. Observe figure 1.1 and answer the following question. Point 1. Which place are shown on the map? Point 2. In which city is Taj Mahal located? Point 3. In which continent is Taj Mahal located? Point 4. In which direction the Taj Mahal located for? Graham in St. Petersburg, for Katya in Kimberley, for Misiko in Tokyo, and Meenakshi in Port Blair. Shahid in Agra is specifying the direction in which the other lives. How will he express them?
In which direction will Natalia in Rome and Enric in Lima say the other children live? Will their answer be same? Graham, Katya, Michiko, Natalia, Meenakshi, Shahid, and Enric have answered the above question differently using direction and subdirection. The Taj Mahal is located at one and same place, and that is Agra. However, when each one of the children told the direction from their respective places, their answer were different. This means that the use of direction alone does not help us to accurately describe the location of a place. That is why it became necessary to find a new system to state the precise location of any place on the earth. Let us see what it is. Think a little, observe the globe in your school, think about the following question, and then discuss them. There are some vertical and horizontal lines on the globe. Which of these lines are more in number? What level do these lines have? What similarities and differences do you see in the level? Will it be possible to actually draw such line on the earth? Explanation. Figure 1.2 shows the length of the east-west, north-south diameter of the earth, which will give you some idea about the size of the earth. Oceanic water, uneven nature of the land, forest, innumerable island of different size, buildings make it impossible to actually draw such line on earth. In order to overcome this difficulty, geographers develop a miniature model of the earth in the form of globe. This can be used to determine location on the earth. One can actually draw horizontal and vertical line on the globe, though not on the earth. Thus, they are imaginary line on the earth. The location of any place on the earth is determined with reference to the center of the earth. In order to do it, we consider a straight line joining the point on the surface and the center of the earth. At the center, it makes an angle with plane of equator. The measure of angle is used to determine the location. For example, in figure 1.3, the measures of angle XMV is 30 degree. That is, its angular distance from the equator is 30 degree. Look at the figure and tell the angular distance of y from the equator. In figure 1.3 shows another plane, it passes through x. It is parallel to plane of the equator. Observe 1.3 and see how it meets the surface of the earth. Note that it forms a circle on the surface. Any point on this circle and the equatorial plane form an angle of 30 degree
at the center of the earth. Do it yourself. Use figure 1.4 for the following. In upper portion of the circle, at the center X, draw an angle of 20 degree. V1x K1, V2x K2, K1 and K2 being the position on the circle, draw an ellipse joining K1 and K2. In the lower half of the circle, mark angle of 60 degree and name the points on the circle P1 and P2. Draw an ellipse joining P1 and P2. Can you tell, are the distance between K1, K2, P1, P2 the same? Compare the distance x K1 and x P2. Are these distance same or they are different? Now compare the ellipse you have drawn. Which is the larger ellipse? Why? Explanation. Parallel of latitudes. You must have realized that the ellipse drawn by joining 20 degree point is larger than ellipse that join the 60 degree point. However, the distance x K1 and x P2 are the same. This is because we are dealing with sphere. Note that though these lines appear to be ellipse in the diagram on the globe, they are circle. The circles thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another. Hence, they are called parallel of these latitudes. The values of parallels are angular measures expressed in degrees. The degree of parallel are measured from the equator as shown in figure 1.5. That is why the equator is considered as 0 degree parallel. It is the largest parallel and also great circle. The angular distance of other parallel towards north and south goes on increasing away from the equator. Use your brain power. Explain the meaning of the term equator. The equator bisects the earth into north and south part. The one to the north is called north hemisphere, while the one to the south is called south hemisphere. Toward the north and south of the equator, parallels of the latitude progressively become smaller and smaller on the globe and also on the earth. At the north and south end, the earth axis, they appear as point. These are called North Pole and South Pole, respectively. While mentioning the value of parallel, it is necessary to mention whether it is in northern or southern hemisphere. The parallel from the northern hemisphere are referred to as 5 degree north, 15 degree north, 30 degree north, 50 degree north, whereas the parallels from the southern hemisphere
are referred to as 5 degree south, 15 degree south, 30 degree south, and 50 degree south. The line joining all the places located to north of the equator at angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel. Hence, the place on this parallel will be at the same latitude, which is 30 degree north. New Orleans in North America, Cairo in Africa, or Basra and Lhasa in Asia are all located in 30 degree north parallel. The same concept holds good for all other parallels. See figure 1.6. One can draw 181 parallels on the earth at the interval of 1 degree. Point 1 at 0 degree, that is the equator, 90 parallel on northern hemisphere minus 1 degree north to 90 degree north, 90 parallels in the southern hemisphere minus 1 degree south to 90 degree south. Do it yourself. Take an orange and peel off its skin. You will see the segment inside and thin vertical line in them. Carefully take out one segment. Observe the segment and the gap it has left in the orange. See figure 1.7. See if the shape of the central and terminal portion of the segment is same or different. See if the angle of the gap is same at all points. Find how many segments there are in an orange. The orange is spherical with circular cross section. There are 360 degree in a circle. The earth being spherical, we consider 360 degree with earth to the with respect to the earth as well. In figure 1.8, angle ABC, angle DEF, angle GHI have the same measurement 50 degree. However, the distance between A and C, D and F, and G and I are different when measured on Earth's surface. That is because the Earth is spherical in shape. Do it yourself. Use figure 1.9 to do following. Let the line AM be 0 degree. Draw the line MB. Measure the angle it makes with the line AM and write it near B. Note the semicircle that passes through B and join the
North and South Pole, trace it. Now join MC, measure angle AMC, and write it next to C. Draw a semicircle that passes through C and join the north and south poles. Draw a line that passes through point A at 0 degree and join the north and south poles. Explanation: Meridians of longitudes. You will realize that the line drawn from a point A, B, and C make angles at M. The center of the earth on the plane to the equator. Through these points, we can draw semicircle joining both the poles. Starting with point A, we can draw similar semicircle through point placed at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. One of these meridian is considered to be 0 degree. It is known as prime meridian. The angular distance of other meridian from the prime meridian are measured in degree and are called longitudes. You have done this in activity based figure 1.9. The 0 degree and 180 degree meridian lie opposite on the globe, forming a circle. This circle divides the earth into eastern and western hemisphere. All meridians are equal in size. Meridian in the eastern hemisphere are labeled as 10 degree east, 25 degree east, 135 degree east, etc. While in the western hemisphere, they are labeled as 10 degree west, 25 degree west, 135 degree west, etc. 30 degree east is semicircle that joins all places at an angular distance of 30 degree from the prime meridian. Some of them are Cairo, Harare, and Durban in Africa. See figure 1.6. Though the earth is huge in size, we can tell the exact location of a place on earth using latitude and longitude. Note that the earth distance between adjacent parallel is same everywhere, but the distance between two adjacent meridian is not same everywhere. We can see this even on the segment of an orange. The distance between meridians is maximum on the equator and goes on reducing towards the pole. At the pole, it is 0. The distance between two adjacent parallel is 111 km on the surface of the earth. The distance between two adjacent meridian is also 111 km on the equator. To locate the places within the distance of 111 km exactly, we need to divide the unit degree into smaller units. Degrees are divided into minutes and minutes are divided into seconds. Conventionally, latitudes and longitude are expressed into degrees, minutes and seconds. Each degree is divided into 60 minutes and minute into 60 seconds. These values are expressed using a symbol degree, dash degree minute, dash meridian second, dash second 2 time meridian.
Do you know the distance between any two consecutive meridian is different on different parallels? It is maximum on equator and it is 0 on both the pole. Equator 111 km, Tropic of Cancer and Capricorn 102 km, polar circles Arctic or Antarctic 44 km, poles north or south 0 km. Graticules. The parallel and meridian on the globe form a net that is called graticules. This facilitates determining the location of a place. We see in figure 1.10. Thus, we use latitude and longitude for determining the location on the earth. This method is being used even in today's modern age quite efficiently. Geographical Information System GIS, Geographical Positioning System GPS are also Google Maps, Wikimapia and Bhuvan of ISRO on the internet also make use of latitudes and longitudes. The technology is also available in mobile phone and motor cars. Indian Regional Positioning System. India has achieved self-reliance in global positioning technology with the help of IRNSS Indian Regional Navigation Satellite System. Location Locating any place in the Indian subcontinent is going to be easy for this. India is launching its own series of 7 satellites. It will be then possible to locate any place in the region of South Asia and Indian Ocean precisely. Use your brain power. How many parallel meridian can be drawn on the globe at the interval of 10 degree? I can do this. Express the angular measures of latitude and longitude on the globe or map. Read parallel of latitude or meridian of longitudes. Draw graticules on a sphere object. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग,
एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।